Hello everyone, good morning. Today we are going to discuss this year UPSC Mains 2024 GS1 paper. As you know that from 20th of September our 2024 UPSC exams mains has been started. Mains exam has been started and this has 4 GS paper, 1 essay paper, 2 language paper as well as 2 optional papers. So in GS1, as we know that our syllabus says that there are 3 subjects which has been covered by GS1. First one is history, second one is geography, and third one is part of sociology. Because few questions of sociology also come in GS2. In with concerns with geography, this year, if we see the paper, these almost 7 questions they have come in the exam. First question was what is this was in the paper, it was 4th number, 5th number, 6th number and 7th number. These 4 questions, they were 150 words and each 150 words each, and there are 3 questions which require 250 words for each question. These are 10 numbers, these are 15 numbers. So in these questions, if you analyze these questions, so most of the questions like what is sea surface temperature rise, how does it affect the formation of tropical cyclone? Then another question, second question was that why do large cities tend to attract more migrants than smaller towns? Discuss in the light of condition in developing countries. Next question was very obvious. What is the phenomena of cloud burst? Explain. Addition to that, one more question. It was what is the concept of demographic winter? What is the concept of demographic winter? Is the world moving towards such a situation? Elaborate. Again, next question. These questions were 250 words and one question was the groundwater potential of the Gangetic Valley is on a serious decline. How may it affect the food security of India? Next question. What are Aurora Australis and Aurora Borealis? How are these events triggered? Then last question was what is a twister? What is a twister? Why are the majority of twisters observed in areas around the Gulf of Mexico? So now if you see these questions, in all of these questions, this question particular one, tropical cyclone and sea surface temperature, as we know this era is era of global warming, and due to global warming temperature not only on continents but also on even on marine areas also it is increasing, and it is known as sea surface temperature rise because oceans they are the natural sink for the heat absorption. Almost 90% of the heat which has been released in the environment due to anthropogenic reasons, it has been absorbed by these all oceans, and because of that the temperature of ocean will rise, and the biggest rise biggest increase will happen on at the top surface, and that is known as sea surface temperature rise, and it will have various effect also, some not only on marine ecosystem but also on local climate also. So if sea surface will become warmer, then it will produce more moisture also, and because of this moisture convection will happen, and because of this convection various low depression will form in the ocean, and because of that various these low depression they will convert into tropical cyclones, and that's why these cyclones will have so much occurrence there, as well as they will have high intensity, high
unpredictability in their track or in their course. So this particular question was related to climatology as well as oceanography. Second question, why do large cities tend to attract more migrants? So this question was actually related with migration, that is population and related phenomena. So this question, population and related phenomena, as it has been given within our syllabus. Second question, what is the phenomena of cloudburst? Again, in syllabus we will study that they have mentioned one topic, that is physical as well as human important phenomena. So cloudburst is an important physical phenomena which occurs inside climatology. So this question they have asked, what is phenomena of cloudburst? Explain. Again, what is the concept of, next question, what is the concept of demographic winter? Winter means, it means that in winter generally what happens? Generally dormancy happens, because if you see people living on polar areas, what happened with them? During winter they become dormant, inactive. Similarly, this term has been added with demography. Demography winter means dormancy in the demographic growth or population growth, where this is the particular situation when the population growth rate, it means that the birth rate, natural, the birth rate is now no longer increasing the population. So here what will happen, that the death rate of the individuals of the population will increase than the birth rate. So this will bring the either population stability or sometimes population decline also. So this situation is called as demographic winter, and UPSC has asked that, is the world moving towards it? Elaborate. So we have to check whether this phenomena is real. Yes, we can say that in certain European countries, in Japan, in South Korea, even in China also, the total fertility rate has decreased so much, as well as the replacement ratio, that is 2.1, this has also came down, and it is only 0.5 in Japan, something around 1.5 to 1.2 in European countries. So, and even in India also, there are so many states like Kerala, Tamil Nadu, Punjab, they are registering the negative population growth rate. So this is related with demographic winter, and this particular topic is under human geography and population. Next question, that is groundwater potential of Gangetic Valley. This question comes under our syllabus, that is resources, and in those resources one is natural resources, and in natural resources first one is water resource, and water resource has two things, surface water as well as underground water. So this question is related with underground water resources, and we have seen that our this Gangetic Valley, it is the because of this Ganga river and its tributaries, the northern plain has become the food basket of the India due to the presence of Ganga and its tributaries. And as we know that this northern plain is made up of sedimentary rocks, so huge water percolates downwards and it makes huge underground water resources known as aquifers, and in Gangetic Valley huge aquifers are found. But now due to urgency of food security, now we are growing more and more crops, crop intensity has increased on a smaller field. Now in within a year we can produce 2 or 3 crops also. So for this we need continuous supply of water, and because rain is not available entire year, so what we do, we just put or install a tube well on the earth, and because with the help of this tube well we take out, we withdraw the groundwater, and because with the help of this water we do our agriculture.
So agriculture becomes the biggest consumer of this underground water, and it takes almost 80 to 90% of groundwater for irrigation. So, but in India there are so many things which are related with irrigation, like method of irrigation is very faulty, huge water become waste due to evapotranspiration loss and other things also. So that's why, and day by day global warming is happening, and because of this global warming, the summer monsoon, which was earlier producing huge amount of rain, but now if we study some data 1921 to this 2001 to 2022 21, almost monsoon rain has decreased by 8 to 15%, and this decrease will continue in future also. So when summer monsoon is less, winter temperature has increased almost 3 to 4 degrees centigrade. Every day you in news you will listen that this month, year like January or February month, temperature has broken all past record, and this particular day is registered as the highest temperature day of for the month of February. So what is very obvious that because in winter temperature is rising and summer less water is coming by rainfall, so what will happen, we will depend more and more on groundwater, and this will lead to huge withdrawal of groundwater, and because wastage is very high, so this groundwater will decline, water table will decline, and almost 1 to 2 centimeter per year water is declining in these regions. That's why it will impact food security of the country. That's why this question became very important. Next question was aurora activities. What are aurora activities? कि aurora होता क्या है? There are two kind of aurora activities. Aurora activities are nothing but they are atmospheric events in which the coronal mass traveled from the sun or emitted from the sun when reached on earth environment, it interacts with the particles of earth, various ions are there and they interact, and due to this interaction they collide, and after collision some reaction happens, and because of this reaction various kind of lights originate, and these lighting events they are known as aurora event. If this is happening in north area, then that will be known as aurora borealis, and if this is happening on southern pole of world, then this will be known as aurora australis. And what triggers them? The geostorms or coronal mass ejection trigger them, and sometimes events like sun hotspot, they are particularly responsible for these frequent occurrence of aurora activities. And now the last question, which was what is a twister? What is a twister? Why are the majority of twisters observed in areas around the Gulf of Mexico? Actually, before some days there was a huge high intensity tropical cyclone developed in this region, and the ultimate stage of tropical cyclone is tornado, because this tornado they circulate or they spin so fast that they can twist anything. So these tornadoes also sometimes known as twisters. So UPSC this year they just cleverly they asked this thing. Twister is nothing that is tornado, and for the formation of tornado there are certain favorable conditions are required, and these conditions they are found in Gulf of Mexico. So this Gulf of Mexico produces highest or very high number of these tornadoes. So this question was asked. So last question, this tornado twister question, this first question of tropical cyclone and cloudburst, these three questions they were from physical, they were from this climatology,
of physical geography. Physical geography is very important, and this year they have asked this question: what is sea surface temperature, what is cloudburst event, and what is this twister. Along with that, this question of this aurora activity, this is also under physical geography. So almost 4 questions they came from physical geography, and one question, this 2 questions, this migration question, smaller town and bigger town, as well as this demographic winter, this was from human geography portion, that is population geography. And the next question, that was groundwater potential, this was from resources. So we can divide all these topics, all these questions in topics also. So now let's move further. Come on, very first question, that is question number 4. What is sea surface temperature rise? How does it affect the formation of tropical cyclones? Question number 4 in your paper GS Mains 2020-24. So this very first question was, what is sea surface temperature rise? How does it affect the formation of tropical cyclone? Now, why this question? Because I have told all my students that newspapers are very important. Newspapers, they are very important, because most of the time UPSC just pick those editorial newses, editorial articles and news, various news, directly pick those news and make or form a question, and they can give you that question directly in your paper. As you see in this, that warming of Indian Ocean to accelerate, one IITM study. Another, this was the news on May 2nd of May 2024. This was given in the Hindu newspaper. Another is, sea also rises on understanding the Indian Ocean's local impact. So this was also news on 2nd of May 2024. And the next news was, why are cyclones in the Arabian Sea not so common? This was the editorial article published on August 31st. Now this is September 21. In the very last month, they have given an entire article, why are cyclones in the Arabian Sea not so common. And here they have connected this thing with temperature rise, sea surface temperature rise. So this thing became very important. Even one of my student, he also came almost 5-10 days back, that sir, I am not able to understand this article. Then I explained him, and I told him that it is very possible that UPSC may ask this question, and I became very happy when I saw this question, that UPSC has asked this question. So now that's why reading newspaper and making notes is very important. Either you should do by yourself, or you should follow some teacher also, some classroom also, because newspaper, I will show you in entire my this discussion that almost all questions they came from these newspapers or some articles, and these articles you can find on internet. So this is very, very important. Now let's discuss this question, what is sea surface temperature rise and how does it affect the formation of tropical cyclone. Now what is sea surface? First of all, we have to understand that what is sea surface temperature. As we know that this ocean is having water. This is the land, and along with this land, this is the ocean, and this ocean is having various layers. So this is bottom layer, this is
subsurface layer, and this is the surface layer. So each layer is having its own temperature, because this surface is having some temperature, this subsurface temperature is having some different temperature, and this bottom is also having different temperature. Now in each area, like earth, on earth almost 72% is water, 70%, 71.9% is water. So we can say roughly that on earth almost 71 to 72% of water, and this water is distributed in the form of various oceans like Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Southern Ocean, Indian Ocean, like that. So these oceans, they are being found from pole to equator to pole. So various like North Pole to South Pole, as well as on equator also. So water in equator, it will have more temperature than the water which is available at these polar areas. Now because of that, these latitude, because of various factors like latitude, extent of the ocean, availability or closeness to the land. So these are various factors, intermixing of the water, cloud formation, as well as rainfall. So these, and sunlight also. So because of that, the temperature of sea surface will have certain kind of profile, and this will be known as sea surface temperature profile. And this sea surface temperature profile is dependent on various factors. Simply we can say sea surface temperature profile, and it depends upon various factors, like first factor is latitude, latitudinal location, like in polar areas water is cold, so ocean will be colder, and in tropical area or subtropical area, these areas will receive direct sunlight, that's why water will become more and more warmer. So in polar area water is cold, in tropical area and subtropical area water will be warm. And because of that, when water will be warm in equatorial region and cold in polar region, then what will happen? This warm water will try to reach on colder regions, because we know that when temperature increases, entropy also increases and it swells the water. I mean that it expands the water atoms. Suppose here this is equator and this is polar area. What will happen? Ki on equator energy will be, heat energy will be more, and because of that this water will temperature will become more warmer, and because of this warmness its atoms will expand, and here in polar areas temperature will be less, and because of that water atom will contract. So this will provide some kind of gradient. So water moves from equator towards pole areas on surface. So these are termed as ocean currents, and at the bottom of these, when this water will sink down, and when here some water has been removed, so here a void has been created. So at the bottom, one bottom oceanic currents will flow. This is known as thermohaline circulation, and because of this mechanism of thermohaline circulation, oceans they maintain their temperature. Now one factor is that this thing, latitudinal location. Second is
mixing of water through oceanic currents and bottom thermohaline circulation. Now again, temperature will also dependent upon season. Like during winter, less sunlight comes, so even water in tropical area also it become cooler. And in summer, in polar areas, because in summer, in polar area also the ocean temperature may rise. So these things are dependent upon season or duration of year. Now other factors are also like boundness or nearness to the land, कि लैंड के कितने पास में है. अगर लैंड के बिल्कुल पास में है तो टेम्परेचर जनरली ऊपर रहेगा, अगर लैंड से एकदम दूर है तो लैंड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ओशन का अपना खुद का वो होगा फैक्टर. एंड क्लोजनेस, कि क्लोज्ड तो नहीं है ओशन, जैसे है कई ओशंस हैं जैसे कि मेडिटेरेनियन सी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, अरेबियन सी है, इनके टेम्परेचर क्या है, ये थोड़े से ज्यादा हैं. क्यों ज्यादा है? बिकॉज दे आर बाउंडेड बाई, लैंड लॉक्ड है, क्लोज्डनेस और लैंड लॉक्ड है. सो दिस इज वन मोर फैक्टर. नेक्स्ट फैक्टर इज वाटर addition from rivers. Suppose in tropical areas rivers add so much water, but this water is relatively warm, not very cold, that's why temperature again rises, but it may have some moderating effect on ocean. On the other hand, like in north polar areas, when various rivers they bring cold water from their continents, and when they add this cold water in these oceans, like in Hudson Bay, in North Sea region, various rivers, Danube and various other rivers, when they bring cold water from the continent and when they add this water into the North Sea, what will happen? The temperature of North Sea will decrease. So these rivers addition of water also impact the temperature of oceans. So based on all these factors, latitude, mixing through oceanic currents, seasons, nearness to the land, closedness, landlockedness, or water addition from rivers and glaciers, all these factors define a temperature profile of sea surface. So, but now these are various factors which are available in past also, but now what is happening? Some new things has come, like this era is of global warming. And because of this global warming, huge amount of heat energy, huge amount of carbon dioxide has been trapped inside the atmosphere, and the role played by this carbon dioxide is that it traps heat energy. Those radiation which are going from earth to the space, they are being blocked by this carbon dioxide, and this energy is absorbed by this this carbon dioxide. Then what will happen? The temperature of earth will increase, and there are various mechanisms by which earth will wants to maintain its heat budget, and what will do that? So these oceans, they becomes the natural sink for the absorption of this heat. So they are natural heat sink, और हैं कैसे? Planet sized. Suppose they are planet sized batteries where a huge amount of heat is absorbed. Almost from 1970 से अगर हम देखें,
तो जितना ह्यूमन ने हीट एनर्जी निकाली है और जो एनवायरमेंट में ट्रैप करी है, उसका 90% इज एब्जॉर्ब्ड बाय ओशन। तो ओशियन ने अपने अंदर ऑलमोस्ट 90% हीट जो है, एंथ्रोपोजेनिक हीट जो है, उसको एब्जॉर्ब करके रखा है। देन व्हाट विल हैपन? टेम्परेचर विल राइज एंड दिस 90% हीट एब्जॉर्ब इज नोन एज हीट कंटेंट ऑफ द ओशन। कि हीट जो कंटेंट है ओशन के अंदर, इट इज इंक्रीजिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस हीट कंटेंट, इवन वी अर्लियर वी नो दैट देयर आर हीट वेव्स। हीट वेव्स कि जो हीट वेव्स होती थी वो जनरेट होती थी, और हीट वेव्स कहां जनरेट होती थी? जनरली ऑन लैंड, कि लैंड पे हीट वेव आ रही है। बट नाउ ए न्यू फिनोमिना ऑफ मरीन हीट वेव हैज स्टार्टेड। मरीन हीट वेव, कि मरीन हीट वेव कि ओशन में भी हीट वेव्स आ रही हैं। तो अब होएगा क्या कि इट विल हैव वेरियस इंपैक्ट्स। सो सी surface temperature is temperature of the upper surface of the ocean, and because of this global warming and various anthropogenic reasons, the temperature of this surface is increasing. This is known as sea surface temperature rise. And what are the cause behind this rise? Cause behind this rise, that is natural। अगर हम नेचुरल देखें, नेचुरल जैसे कि नेचुरली कब ज्यादा पानी गर्म हो सकता है? या तो सन से आपकी ज्यादा हीट एनर्जी आने लगे, कि सोलर हॉटस्पॉट साइकिल आ गई, तो सोलर हॉटस्पॉट साइकिल की वजह से ज्यादा एनर्जी सन से नीचे आ रही है, तो ज्यादा जब रेज आएंगी, ज्यादा सन की एनर्जी आएगी, तो ऑब्वियसली वाटर विल the temperature of water will increase। तो या तो सन एनर्जी ज्यादा आने लगे, या नेचुरल फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, या क्या हो कि अर्थ के नीचे से वोल्केनिज्म बढ़ जाए, वोल्केनिज्म बढ़ गई एक्टिविटी। हमने देखा भी कि इंडियन प्लेट जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेट से जहां मिलती है, वहां पे इन द रीजन ऑफ इंडोनेशिया or Java Sumatra region, what is happening? So much volcanism is there, and because of this volcanism, so much lava is being released into water also, and this water, this lava released huge amount of energy in that water. So the temperature of Indian Ocean also increases due to that. So volcanism can also play a factor in increasing the temperature. Third thing, this sun energy, volcanism, as well as other natural factors also responsible, like due to some cycle, the mixing of water, like जैसे कि अगर हम देखें इंडियन ओशन की एक स्पेशलिटी, हम अगर देखें कि इंडियन ओशन में, ये जैसे इंडिया है, ये पूरा इंडियन ओशन है, अब इंडियन ओशन जो है ये कनेक्टेड है नीचे से सदर्न ओशियन से या अंटार्कटिक ओशन से, और एक तरफ से ये यहां से ये सुमात्रा है, ये जावा है, सॉरी सुमात्रा एंड जावा, दिस इज सुमात्रा, सुंडा ट्रेंच यहीं पे। नाउ मलक्का, एक इस ट्रैप के जरिए ये पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है, पैसिफिक ओशन से, कि वाटर जो है अपने नीचे से थोड़ा सा पानी जो है पैसिफिक ओशन का इधर से आ रहा है, जिसे ड्यूरिंग एल नीनो व्हाट इज हैपनिंग, द वार्म फेज ऑफ पैसिफिक ओशन, ड्यूरिंग दैट व्हाट विल हैपन, पैसिफिक ओशन विल सप्लाई वार्म वाटर टुवर्ड्स इंडियन ओशन and cold water will be supplied by this southern ocean। तो इंडियन जो आपका बे ऑफ बंगाल है, इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है,
बट नाउ नेचुरली वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, कि जो ये वार्मनेस है ये अब बढ़ती जा रही है बे ऑफ बंगाल में। कैसे कि पैसिफिक ओशन जो है इट इज सप्लाइंग मोर वार्मर वाटर टू द इंडियन ओशन, this Bay of Bengal, and this southern ocean which was sending us cold water, now this coldness has decreased, so now this is also sending more warmer water. So now what will happen, the temperature of Bay of Bengal will increase. Two factors कौन कौन से हैं कि एक तो पैसिफिक ओशन से जो पहले वार्म वाटर आ रहा था वो भी बढ़ गया है, और साथ साथ में जो सदर्न ओशन से कूलिंग इफेक्ट आ रहा था, कोल्ड वाटर जो आ रहा था इंडियन ओशन में वो भी बढ़ता चला जा रहा है, मतलब कोल्ड वाटर की जगह वार्म वाटर आने लगा है। बिकॉज ऑफ दिस द बे ऑफ बंगाल टेम्परेचर विल इंक्रीज. So this is also a kind of natural factors in which more warm water is supplied by oceanic currents. एक तो ये नेचुरल फैक्टर हो गया जाके, और चौथा कौन सा हो जाए कि ये सर्कुलेशन जैसे है कि नीचे से क्या होता है कि आपका ऊपर से वार्म वाटर जो है ये इक्वेटर से जाता है पोल की साइड में, और पोल पे ये डिसेंड होता है और पोल से आ जाता है फिर से नीचे बॉटम से इक्वेटर की तरफ. तो दिस इज नोन एज जायर सर्कुलेशन, जायर सर्कुलेशन. बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि ये जो ग्रो इसका रेट ऑफ मूवमेंट है, ये जो जायर पूरा सर्कुलेट हो रहा है इसकी स्पीड भी स्लो होती चली जा रही है कि स्पीड इज स्लोअर. तो जब स्पीड इसकी स्लो हो जाएगी तो इंटरमिक्सिंग भी स्लो हो जाएगी, तो टेम्परेचर जहां पे जैसा मेंटेन है वैसा बना रहेगा. तो बिकॉज ऑफ दैट आल्सो दिस स्पीड स्लोइंग आल्सो इज producing a huge result on global surface, this ocean surface temperature rise. Now these are some natural factors which are responsible for this ocean sea surface temperature rise. First this first sun energy sunspot cycle, volcanism, mixing of water, and this equator, this gyre circulation, slowing of gyre circulation. Addition to that, the biggest contributor is anthropogenic region. Anthropogenic region. And what are anthropogenic region? Those are due to water, warm water directly आप warm water add कर दो. कैसे? वार्म वाटर एडिशन बाय फैक्ट्रीज. कई फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट, या पावर प्लांट्स, कोस्टल एरियाज में जितने पावर प्लांट्स होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, डायरेक्टली क्या करती हैं, अपने बॉयलर का जो गर्म पानी होता है डायरेक्टली वो सी में रिलीज कर देते हैं, तो उससे सी का टेम्परेचर बढ़ता है. दूसरा जो बिगेस्ट हम अभी देख रहे हैं कि एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स की वजह से क्या हुआ, ग्लेशियर्स जो हैं मेल्ट हो गए. अब जब ग्लेशियर मेल्ट हो गए तो अब क्या हुआ कि जो पोलर एरियाज हैं, जो पोलर एरियाज हैं, यहां पे सब ग्लेशियर मेल्ट हो गए. अब मेल्ट होने से सब पानी में कन्वर्ट हो गए, एंड जब ये कन्वर्जन हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन कि नाउ सन से जितनी रेज आ रही हैं, पहले जब वो ग्लेशियर पे पड़ती थी, ग्लेशियर वाज हैविंग, दिस स्नो इज हैविंग हाई एल्बिडो, कि हाई एल्बिडो हुआ करता था, जिससे एल्बिडो मींस रिफ्लेक्शन पावर, कि किसी सरफेस की रिफ्लेक्शन पावर कितनी है, पावर रिफ्लेक्शन कैपेसिटी कितनी है. तो पहले जब ये आइस पे पड़ती थी रेज तो ये हाईली रिफ्लेक्ट हो जाती थी, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता था. बट नाउ चूंकि अब एवरीथिंग एवरीवेयर इज वाटर, तो अब सन की जब ये रेज आ रही हैं तो बिकॉज ऑफ दैट हीट एनर्जी इज बीइंग एब्सॉर्ब्ड बाय दिस वाटर, और वाटर अपने पास इस टेम्परेचर को रख लेगा. तो इससे क्या होएगा
कि सी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि एल्बिडो वाटर का कम होता है, वाटर सरफेस का। तो बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर विल इंक्रीज, और ये एक विशियस साइकिल है। कैसे कि मोर आइस मेल्ट होएगी, ओशन वार्म हुए तो वार्म वाटर फिर से ज्यादा आइस को मेल्ट कर देगा जाके, तो ये एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी करंट में हम क्या देख रहे हैं कि इन पोलर एरियाज टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है, और उसकी वजह से क्या है कि अब ढेर सारे ग्लेशियर्स जो हैं ये रिट्रीट हो रहे हैं या डिसएपियर होते चले जा रहे हैं। तो बिकॉज दीज आइस शेल्फ्स जितने बड़े बड़े हैं दुनिया के, वो धीरे 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 घटते चले जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ व्हाट, दिस एंथ्रोपोजेनिक रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कि CO2 जो है ये हीट एनर्जी ट्रैप करती है, और वही हीट एनर्जी ग्लेशियर को मेल्ट कर देता है, और मेल्ट करने से ग्लेशियर पानी में कन्वर्ट होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन दे एब्जॉर्ब मोर एंड मोर हीट। फिर तीसरा फैक्टर है जो एंथ्रोपोजेनिक रीजन में क्या हो जाए कि आप, एक तो ये एक्टिविटी हो गई जाके, दूसरा आप CO2 रिलीज कर दो, और भी कई ढेर सारे रीजन ऐसे हो सकते हैं कि जिनकी वजह से ये टेम्परेचर जो है राइज हो जाए। सो दीज आर वेरियस रीजंस बिहाइंड दिस वार्मिंग ऑफ ओशियंस। नाउ इसके इंपैक्ट क्या होते हैं, कि इंपैक्ट क्या हो रहे हैं इसके ढेर सारे इंपैक्ट हो सकते हैं सी सरफेस टेम्परेचर के। सबसे पहले तो हीट कंटेंट जो है ऑफ ओशन इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, मरीन हीट वेव स्टार्ट हो जाएंगी, और जब मरीन हीट वेव स्टार्ट हो जाएंगी तो उससे क्या होएगा, लॉस टू इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम, और उसकी वजह से कई एडवर्स इंपैक्ट आएंगे। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे कि अगर गल्फ ऑफ मैक्सिको है तो वहां पे ढेर सारे टोर्नेडोज बनने लगेंगे, ट्विस्टर्स बनने लगेंगे। इन इंडियन ओशन एंड अदर ट्रॉपिकल रीजन ढेर सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनने लगेंगे। तो ऐसी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बनेंगी। तो पहली इवेंट जो यूपीएससी ने हमसे पूछी है इस साल कि इंपैक्ट ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन। एज वी नो दैट दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन होते क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं लो प्रेशर एरियाज होते हैं। लो प्रेशर एरिया, साइक्लोन्स लो प्रेशर एरिया होते हैं, जनरली फॉर्म ओवर ओशियन सरफेस, और बनते हैं कैसे कि ह्यूज सप्लाई ऑफ मॉइस्चर एंड वार्म वाटर। तो इसके लिए क्या होएगा, जब वार्म वाटर के लिए टेम्परेचर जो होना चाहिए ऑलमोस्ट 26 डिग्री से 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, एबव देन 26-27 डिग्री, और इनको थोड़ा सा कोरियोलिस फोर्स भी चाहिए होता है क्योंकि विंड को सर्कुलेट करना है। तो बिकॉज ऑफ दैट नीड कोरियोलिस फोर्स, तो इस कोरियोलिस फोर्स को चाहिए। तो इसलिए जनरली क्या होते हैं, दीज साइक्लोन्स दे अकर ऑन 5 to 20 डिग्री लैटिट्यूड्स इन नॉर्थ एंड साउथ। और ये साइक्लोन्स जो होते हैं इनको क्या होता है कि विंड शेयर जो होना चाहिए, ये बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, यू डोंट नीड इन जनरल स्टडी, बट विंड शेयर मींस कि ऊपर एयर जो हो उसमें एकदम स्टेबिलिटी हो। अगर एयर ऊपर मूव होती रहेगी तो क्या होएगा कि एयर मिक्स होती रहेगी, तो कन्वेक्शन जो है वो ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। कि एयर यहां पे सी सरफेस टेम्परेचर गर्म हुआ तो कन्वेक्शन हुआ कि एयर जो है आसपास की उसके सराउंडिंग की ये ऊपर उठने लगेगी, और ऊपर उठ के चली गई, कन्वेक्शन हुआ। अगर यहां पे शेयर वेलोसिटी हुई विंड की, कि विंड बहुत ज्यादा मूव हो रही है, तो उससे क्या होएगा कि इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, और इंटरमिक्सिंग होने से तो ये लो प्रेशर एरिया कभी साइक्लोन में नहीं बन पाएंगे। तो साइक्लोन के बनने के लिए लेस विंड
शियर चाहिए होता है, और एक कंडीशन होती है एब्सोल्यूट इंस्टेबिलिटी। तो कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टेबिलिटी, कि जिसमें कि एयर ऊपर ऊपर ही जल्दी जल्दी हाई कन्वेक्शन हो, कि ऊपर ऐसा सिचुएशन है कि कोई ना कोई एक, जैसे नीचे से एयर ऊपर उठ रही है कन्वेक्शन के थ्रू, और ये इसको कोई खींचने वाला ऊपर सिस्टम है। तो अगर नीचे से साइक्लोन बन रहा है तो ऊपर एंटी साइक्लोन अगर बन रहे, तो क्या होएगा कि ये साइक्लोन को और ज्यादा मजबूत कर देगा। एंटी साइक्लोन क्या करेगा कि यहां से ये पूरी एयर को संक्शन की तरह खींच लेगा, तो ये पूरा हाई कन्वेक्शन होएगा यहां पे। तो इससे क्या होगी, ये सिचुएशन एब्सोल्यूट इंस्टेबिलिटी आती है। तो इस सिचुएशन में क्या होएगा, हाई वेरी हाई अपड्राफ्ट होएगा यहां पे। तो ये ऐसी सिचुएशन में हाई अपड्राफ्ट होएगा, तो विंड ऊपर उठेगी, और जब विंड ये ऊपर उठेगी तो कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से ये सर्कुलेट करने लगेगी चारों तरफ, तो इसी से तुम्हारा पूरा बन जाता है साइक्लोन। सो दीज आर फ्यू कंडीशंस व्हिच आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं कैसे, कि आपका जो साइक्लोन है वो बनता जब है तो सी सरफेस टेम्परेचर उसको कैसे सपोर्ट करेगा जाके, कि यहां से पहले हाई कन्वेक्शन था, इस हाई कन्वेक्शन की वजह से ये पूरी एयर ऊपर उठी और ये साथ साथ में रोटेट होने लगी, और रोटेट होने के बाद में ये एक ढेर सारा ये बड़ा सा इन्होंने क्लाउड का सिस्टम बना लिया। तो दीज आर वेरियस स्टेजेस इन विच दिस साइक्लोन फॉर्म। सो नाउ अब यहां पे ओशन कैसे, यहां पे जो टेम्परेचर है वो कैसे इसको इंपैक्ट करेगा, कि पहला तो अगर मोर टेम्परेचर राइज इन सी सरफेस अगर है, कि सी सरफेस का टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो क्या होएगा कि ये एक हीट इंजन की तरह करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीट इंजन। अब ये एक तरीके से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा मॉइस्चर बनेगी, ज्यादा वेपर बनेगी, और उससे क्या होएगा कि वेरी हाई कन्वेक्शन, और उससे क्या होएगा कि जब टेम्परेचर पूरा जब बढ़ जाएगा, कि मोर टेम्परेचर राइज इन सी सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू हाई हीट कंटेंट, कि अब ओशन में ज्यादा हीट है, तो इस वजह से क्या होएगा कि एक तरीके से ये स्ट्रॉन्ग हीट इंजन की तरह काम करेंगे, तो हाई कन्वेक्शन होएगा, जिस कन्वेक्शन की वजह से ढेर सारे आपके लो प्रेशर्स बनेंगे। दीज वेरियस लो प्रेशर्स ढेर ओशन के अंदर, कि ये ओशन की सरफेस अगर है, यहां पे भी बन रहा 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 है, तो इससे क्या होएगा कि फ्रीक्वेंसी जो है, या फ्रीक्वेंसी कह लो या ऑकरेंस है, सबसे पहला तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाएगा, ऑकरेंस जितनी है साइक्लोन की वो बढ़ जाएगी, पहला ऑकरेंस बढ़ जाएगी। दूसरा कि ढेर सारी ये लो प्रेशर एरिया होते हैं, दे ऑल डोंट कन्वर्ट इनटू दिस साइक्लोन। अभी तक क्या हो रहा था कि जितने भी लो प्रेशर एरिया हैं उनमें से बहुत कम ऐसे होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि विच कैन कन्वर्ट इनटू फुल फ्लेज्ड साइक्लोन। तो अब क्या होंगे, हाई चांसेस दैट लो प्रेशर एरिया कैन कन्वर्ट इनटू फुल प्लेस्ड साइक्लोन। और तीसरा और क्या हो सकता है कि इंटेंसिटी जो है साइक्लोन की कैटेगरी 4 कैटेगरी 5, इसमें इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी हर साइक्लोन की। चौथा ड्यूरेशन, कि जनरली जो साइक्लोन्स होते हैं वो 5 से
10-12 दिन के अंदर खत्म हो जाते हैं। तो अब क्या हो कि हाई इंटेंसिटी का है तो ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगी इसकी, और जब ड्यूरेशन बढ़ेगी तो इसका डिवेस्टेशन भी बढ़ेगा। कैसे कि एक्सेसिव रेनफॉल, गस्टी विंड, विंड की वेलोसिटी जो है इट कैन इवन क्रॉस 200 किलोमीटर पर आवर, स्पीड भी क्रॉस कर सकती है। एक्सेसिव रेनफॉल, गस्टी विंड्स, हाई स्टॉर्म सर्जेस, कि ढेर सारे स्टॉर्म सर्जेस भी आ रहे हैं। तो ऐसे करके इसके डिवेस्टेशन इंपैक्ट भी बढ़ जाएंगे जाके ऐसी सिचुएशन में। और रेयर फिनोमिना भी होंगे, जैसे कि ये जो न्यूज थी पर्टिकुलर, ये एग्जाम में क्वेश्चन क्यों आया, पर्टिकुलर ये न्यूज जो थी अभी साइक्लोन क्या हुआ है, रेयर फिनोमिना। रेयर फिनोमिना क्यों था इंपॉर्टेंट, कि जैसे अभी रिसेंटली अगस्त में ये बे ऑफ बंगाल है, यहां पे एक लो प्रेशर डेवलप हुआ, लो प्रेशर। और ये लो प्रेशर क्या हुआ कि ये ट्रेवल यहां से वेस्ट बंगाल में करा, फिर यूपी होता हुआ, एमपी होता हुआ ये राजस्थान पहुंचा, और राजस्थान से गुजरात में, और गुजरात से ये ट्रेवल करता करता अरेबियन सी से ये पूरा पहुंच गया ओमान में जाके। ये पहली बार या इन पूरी 100 सालों में ऐसा 3 से 4 बार हुआ है। रिसेंटली ये अभी हुआ, क्यों इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर जो है इसने, ये जो अरेबियन सी है, जनरली क्या होता है कि अरेबियन सी में वेरी लेस साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड, but in most of the cyclones they will form on Bay of Bengal, and these Bay of Bengal cyclones don't have that capacity to cross the entire mainland of India. But recently we have seen that the temperature of ocean is increasing, and what will happen कि ओशन में भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, और धीरे 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 जाके इन्होंने पूरी लैंड पे गए, लैंड पे ये लो प्रेशर मूव होते रहे कंटिन्यूअसली, और अरेबियन सी की तरफ भी आ गए, और अरेबियन सी से ये पूरा इधर चले गए। तो बिकॉज ऑफ दिस, और ये साइक्लोन जो है ये आसना साइक्लोन, ये 24 से 25 अगस्त स्टार्ट हुआ था और 1-2 सितंबर को ये खत्म हुआ। तो इस आसना ने क्या करा साइक्लोन ने, कि इस गुजरात वाले एरिया में, एमपी वाले एरिया में, कुछ पार्ट राजस्थान में, बड़ोदरा, सूरत, दीज आर डिस्ट्रिक्ट, सौराष्ट्र रीजन, तो यहां पे इसने कैओटिक सिचुएशन क्रिएट कर दी। ढेर सारी फ्लड्स आई, ढेर सारी ह्यूमन लॉस हुआ, मटेरियल लॉस हुआ, इकोनॉमिक लॉस बहुत ज्यादा हुआ। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोन आसना। और फिर ये बोलते हैं कि अरेबियन सी है ये, इट इज नॉट वेरी फेवरेबल spot for the creation of these tropical cyclone, but because of rise of the temperature, the temperature of Arabian Sea is also increasing, that's why it is also producing most of the cyclones now. जैसे last year in 2020-23 क्या था, साइक्लोन बिपरजॉय आया था, और बिपरजॉय ने क्या करा था आके कि इंडियन मानसून के साथ ये मिक्स हो गया आके, और उस वजह से क्या हुआ कि अचानक से ढेर सारी रेनफॉल हो गई। और रेनफॉल हुई कहां पे जाके, केरला रीजन में, और भी रीजन में। कई बार ये होता है कि ये इंडियन जो मानसून सेल होती है इसको भी निगेटिवली इफेक्ट करते हैं। क्यों? जनरली बे ऑफ बंगाल में सब साइक्लोन ओरिजिनेट होते हैं और यहीं तक खत्म हो जाते हैं। इंडियन अरेबियन सी जो है यहां पे मेन फीचर है जो समर का, और वो है मानसून। तो मानसून मेन फिनोमिना होता है, लेकिन दिस फिनोमिना कैन बिकम वीकेंड ड्यू टू दीज प्रेजेंस ऑफ दीज साइक्लोन्स। तो छठा ये है कि रेयर फिनोमिना भी होते हैं। और लास्ट रीजन क्या है कि सी सरफेस टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो इट मे बी पॉसिबल, जैसे साइक्लोन्स जो हैं वो जनरली मिलते हैं आपको प्री मानसून और पोस्ट मानसून, 2 सीजन हुआ करते हैं। लेकिन अब ये हो सकता है कि राइज, अगर सी में टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो ये हमेशा फुल ईयर साइक्लोन्स आ सकते हैं, कि दे आर नॉट कन्फाइंड ओनली इन प्री मानसून सीजन और इन पोस्ट मानसून सीजन, बट दे कैन अकर इन एट एनी टाइम ऑफ एंटायर ईयर। और साइक्लोन्स जो हैं
पहले क्या हुआ करता था कि दे आर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल फिनोमिना, कि केवल ट्रॉपिकल रीजन में और सब ट्रॉपिकल रीजन में होते थे, बट नाउ इट मे बी पॉसिबल दैट दे कैन एक्सटेंड टू फर्दर हायर लैटिट्यूड्स. तो these are various impact on cyclones due to sea surface temperature rise. Hope you understand the question. Question is, what is sea surface temperature, how it is depend on various factors, and what is the reason behind this sea surface temperature rise, and both natural reason as well as anthropogenic reason, and addition to that its impact on cyclone. For the formation of cyclone, various conditions are necessary, and these conditions may be positively impacted by the sea surface temperature rise. So it can produce high intensity, high frequency, as well as unpredictable trajectory or course of these cyclones. So this is entire about our first question. Okay. Now